Hello friends. So in our this lecture, starting with the example number 32. Okay. So 0 to pi x into sin x upon 1 plus cos square x. चलो अगर यहाँ पर x नहीं है तो taking cos x equal to the derivation of cos is sin, but यहाँ पर x है तो यूजिंग अवर रूल तो बाद में जो दो पार्ट्स बनेंगे वहां पर x निकल जाएगा. ओके, चलो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. I our rule is addition of limit minus x, all x equal to putting addition of limit is pi, so pi minus x, ax and here x, pi minus x sine pi minus x 1 plus cos square and x equal to pi minus x dx. So I 0 to pi minus x sine pi minus x is a sin x 1 plus here square, so pi minus second quadrant generally cos is negative, but cos square is positive dx. नेक्स्ट क्या करेंगे, इन द न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर सेपरेट 1 plus cos square 1 plus cos square. तो दिस पार्ट इज अवर आई और नॉट, यहां पर हम पाई कॉमन ले लेंगे. तो जैसा मैंने आपको बोला था कि पाई कॉमन मीन्स पाई आउटसाइड, पाई इज कांस्टेंट आउटसाइड. ओके, तो ओनली sin x upon 1 plus cos square, then method cos x equal to t. But first converting our integration into two parts. So first integration pi outside integration 0 to pi sin x upon 1 plus cos square x dx minus second integration 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx. So I equal to pi integration 0 to pi sin x upon 1 plus cos square x dx minus I. Taking I other side, so I plus I 2i equal to pi integration 0 to pi x, नहीं, only sin x upon 1 plus cos square x. Taking cos x equal to t. Derivation of cos is minus sin x dx equal to dt. Limit change x equal to 0, x equal to pi, then t equal to x equal to 0, so cos 0 is 1 and x equal to pi, so cos pi is minus 1. So now integration 2i equal to pi as it is. Integration downside 0 means answer 1 and upside answer minus 1. Sin x dx equal to minus dt, it means minus 1 and dt and 1 plus t square. Limit is not properly. 1 to minus 1 is not proper limit. Minus 1 to plus 1 is proper limit. Then what to do? Okay, interchanging our limit and sign change. Our
our question is minus 1 upon 1 plus t square. If we interchange, it becomes plus 1 upon 1 plus t square. So 2i equal to minus 1 to plus 1, so sign change 1 upon 1 plus t square dt. So this one is 1 upon 1 plus a square plus x square plus a square. Formula a is 1. So 1 by 1, tan inverse t by 1. So only tan inverse t. Minus 1 to plus 1. Now upper minus lower and pi हम भूल गए अब. So 2i equal to pi and bracket. Upper limit is 1. So tan inverse 1 minus tan inverse minus 1. 2i equal to pi. Tan inverse 1 means pi by 4. Tan inverse and negative, तो negative outside, minus minus plus, and tan inverse 1 means again pi by 4. Pi into bracket. Pi by 4 plus pi by 4. 45 plus 45, 90 means pi by 2. So I equal to pi into pi, upside pi square, by 2 into 2, 4. Okay, so pi square by 4 is our answer. Ready? So same problem here. X upon 1 plus sine. If here 1 upon 1 plus sine, then possible, but this is x upon 1 plus sine. तो सेम हमें x रिमूव करना है, तो जो यहाँ पर x रिमूव हो गया, here I, तो फर्स्ट में x रिमूव हो गया, तो सेम. तो this is a equation 1. Applying our rule. 0 to pi, x equal to putting addition of limit is a pi minus x. So pi minus x. 1 plus sine and x equal to pi minus x dx. Therefore I 0 to pi minus x upon 1 plus sine pi minus x is a sine x dx. Now करो separate. Pi upon 1 plus sine x minus x upon 1 plus sine x dx. Okay, separate the integration. 0 to pi, but first integration pi outside and then applying integration. To pi integration 0 to pi 1 upon 1 plus sine x dx minus second integration 0 to pi x upon 1 plus sine x dx, and x upon 1 plus sine x is our I. So I equal to pi integration 0 to pi 1 upon 1 plus sine x dx minus I, taking I other side. So I plus I 2I equal to pi 0 to pi 1 upon 1 plus sin x dx. चलो यहां पर एक तो था कि here cos x equal to t, तो derivation of cos is upside sin, but now only denominator is 1 plus sin. Then what to do? एक सम था जब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में 7.1 में कि 1 plus cos, if here cos, तो 1 plus cos then formula, but 1 plus sin then perfect square. but यहां पर perfect square भी डिनोमिनेटर में अरेंज हो रही है, हम सेपरेट कैसे करें? इंडिविजुअली इंटीग्रेशन हमें पॉसिबल करना है, तो डाउन साइड अगर आप कितनी भी 100 टर्म है तो आप सेपरेट नहीं कर सकते. तो 1 प्लस साइन मीन्स याद रखो, अगर याद नहीं है तो ओनली 1 प्लस साइन मीन्स परफेक्ट स्क्वायर, बट परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल. अपने परफेक्ट जो भी याद रखा है वो राइट है कि परफेक्ट स्क्वायर, बट परफेक्ट स्क्वायर नॉट पॉसिबल, ये तो याद रखना ही है. तो सेकंड पॉइंट क्या करेंगे? हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन, कॉन्जुगेशन, रेशनलाइज. अब क्या याद रखोगे?
rationalize 2i equal to pi integration 1 upon 1 plus sin x. Okay, rationalize तो downside 1 plus sin तो multiply and divide by 1 minus sin. वन माइनस साइन हियर ऑल्सो 1 minus sin x and dx आप लिख लेना, ठीक है. सो 2i pi integration 0 to pi upside 1 minus sin x, downside 1 plus sin into 1 minus sin, 1 minus sin square x dx. 2i equal to pi integration 0 to pi 1 minus sin x and 1 minus sin square cos square x. So 2i equal to pi integration 0 to pi. Now cos square separate, there is a single term downside 7.1 sum. Okay, so 1 by cos square is a sec square x minus sin upon cos square. तो sin upon cos square means cos into cos, तो sin by cos tan and 1 by cos sec, तो sec x tan x dx. Ready? Therefore 2i equal to pi, both the integration possible, integration of sec square x tan x minus integration of sec x tan x sec x, and limit 0 to pi. Now upper minus lower. First putting the upper limit pi, making the bracket 10 pi 0 minus sec pi minus 1, तो minus minus plus 1, upper limit over, minus lower limit, putting 0, tan 0 is 0 minus sec 0 is 1. So 2i pi bracket 0 plus 1 is a 1 minus 0 minus 1 is a minus 1, तो minus minus plus 1 and 1 plus 1 2, 2 cancel, 2i equal to 2 pi. So answer of I is a pi. But main thing is how to find the integration of 1 upon 1 plus sin conjugation. Do not make the perfect square here. Okay, चलो तो these are the एग्जाम्पल नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 12. एक और समय ऐसा ही बाकी है, बराबर. देन ओड इवन वाले सम से, मोड वाले सम से, देन दिस मेथड ओवर. ओके, देन वी विल स्टार्ट अवर लास्ट एक्सरसाइज. डन. नेक्स्ट टेकिंग नंबर 14 एंड नंबर 10. नंबर 14 mark in your homework and this is the same like 7.9 exercise. Find the integration. No need to use any rule because there are 2 pi. तो if you put here 2 pi minus x, तो cos 2 pi minus x fourth quadrant cos positive, तो cos raised to 5 वही रहेगा. ओके, तो 5 power then how to solve? 1 time separate cos raised to 4 into cos x dx. Our separate function is cos, so here converting into sin, 1 minus sin square x whole square into cos x dx and taking sin x equal to t. Okay, चलो next number 10. 0 to pi by 2, 2 log sin x minus log sin 2x I and p, बराबर. I, चलो पहले तो एक काम करते हैं कि क्वेश्चन इज लेंथी, तो क्वेश्चन हम मिक्स कर देते हैं. इट मीन्स 2 टाइम log ना, तो कंबाइन करते हैं, बराबर. तो दिस वन इज a log sin square x or not? Minus log sin 2x. Now log minus log, तो log and subtraction, तो division.
sin square x upon sin 2x 0 to pi by 2 log downside putting the sin 2x formula because upside angle is x. So sin 2x 2 sin x cos x. Here one time sin cancel. So sin by cos 10x by 2. So I equal to integration 0 to pi by 2 log 10x by 2 dx. ओके नाउ जो भी डिवीजन है वो सेपरेट कर देते हैं. 0 to pi by 2 log 10x minus log 2. Now converting our integration into two parts. First integration 0 to pi by 2 log 10x dx minus integration log 2 dx. 0 to pi by 2. First integration different, second integration different. So I equal to taking I1 and minus I2, and this is the equation number 1. Okay. Now solving I1. I1 is 0 to pi by 2 log 10x. So I1 0 to pi by 2 log 10. Now here applying our addition of limit minus x. क्योंकि जो up to equation 1 तो हमने क्या काम किया? Only simplification. Now applying our limit because log 10 direct integration not possible. Okay? चलो तो x equal to putting pi by 2 minus x dx. हमने यहाँ पर अप्लाई किया है ना, तो मार्क दिस इज ए नंबर 2 बिकॉज 1 तो ये है, तो दिस इज नंबर 2. ओके चलो तो I1 0 to pi by 2 log 10 pi by 2 minus x cot x dx. Now converting our this cot into equation 2, it means converting cot into 10. So I1 0 to pi by 2 log cot x means 1 upon 10x dx. So I1 0 to pi by 2 log 1 by 10x. Apply the division rule. Log 1 minus log 10x. So I1 0 to pi by 2 log 1 means 0 and minus log 10x. It means 0 minus, so minus outside, and 0 to pi by 2 log 10x. So this is I1 or not? I1 equal to minus as it is, and 0 to pi by 2 log 10x. So I1 equal to minus I1. So 2I1 equal to 0. So I1 equal to 0. Answer of I1 ready. Now solving I2. Now I2 is a integration 0 to pi by 2 log 2. Log 2 outside. So integration of 1 is a x and 0 to pi by 2. Okay. 1 minute. Now upper minus lower, so I2 log 2 bracket pi by 2 minus 0 is a pi by 2. So answer of I2 is a pi by 2 log 2. Done? I1, I2 ready. Now putting the value of I1 and I2 in equation number 1. So equation 1 is
I1 minus I2, I1 is 0 and I2 is pi by 2 log 2. तो फाइनल आंसर माइनस पाई बाई 2 log 2. टेक्स्ट बुक में ये आंसर नहीं है, उन लोगों ने क्या किया हुआ है, माइनस यहां पर पावर बनाओ, पाई बाई 2 एज इट इज है, माइनस पावर बनाओ तो 2 रेस टू माइनस 1 तो 1 बाई 2, तो पाई बाई 2 log 1 बाई 2. ओके, दिस इज योर फुली सम नंबर 10. एक बार रिपीट करते हैं. चलो, मोर देन वन टाइम log, तो हमने क्या किया, मिक्स, तो 2 पावर में, देन log माइनस log तो सब्ट्रैक्ट डिवीजन, then here sin 2x तो formula, one time sin cut, sin by cos 10 and upon 2 as it is, log and division तो split, तो these are the two different integration, I1 and I2. I1 is a log 10x. जनरली हम स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 जैसे हम 1 मार्क करते थे, 1 यहां पर हो गया, तो नाउ दिस इज 2. ओके, नाउ एडिशन ऑफ लिमिट माइनस x, तो ये कोट हो गया, कन्वर्टिंग कोट इनटू 10 तो 1 बाई 10 log 1 माइनस log 10. हमें पता ही था कि log 10 इज अवर क्वेश्चन, बट log 1 इज 0 माइनस log 10 तो माइनस log 10 माइनस आउटसाइड log 10 इज I1, तो I1 इक्वल टू माइनस I1, 2 I1 इक्वल टू 0, I1 0, I2 इजी, पुट द वैल्यू ऑफ I1 I2 इन इक्वेशन नंबर 2 1. ओके, चलो, दिस इज योर क्वेश्चन 10. नाउ एक बार चेक करते हैं कि कितने सम्स हुए. जो 7.11 अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ओवर, 5 6 लेफ्ट, 7 8 9 एंड दिस 10 ओवर, बराबर, 7 8 9 एंड 10 ओवर, 11 लेफ्ट, 12 ओवर, 13 लेफ्ट, 15 ओवर, 16 लेफ्ट, 17 ओवर, 18 लेफ्ट, 19 लेफ्ट एंड 20 लेफ्ट. बराबर, तो जो एक तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में परफेक्टली मार्क करके रखो कि क्वेश्चन नंबर 16 इज अ वेरी मोस्ट आईएमपी सम. क्वेश्चन नंबर 16, बराबर, वेरी मोस्ट आईएमपी. देन जो यहां पर नंबर 5 6 है, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन नंबर 18. जब भी आप ये वीडियो देखो और यहां पर आप ये सम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जब भी डिस्कशन करें तो टेक्स्ट बुक सामने रखना, ठीक है. क्वेश्चन 5 6 एंड 18 अबाउट मॉड्यूलस, हम एक रूल लिखेंगे मोड वाले, ठीक है. तो 5 6 एंड 18 हो जाएगा. नाउ 5 6 हो गई, मान लो कि वो मोड में हो जाएगा, ठीक है. तो 7 8 9 10 रेडी. नाउ 11 13 एंड 20, लिमिट देखो तो लिमिट 11 13 एंड 20 में, तो 11 इज अ नेगेटिव टू पॉजिटिव, 13 इज नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड 20 ऑल्सो नेगेटिव टू पॉजिटिव. इट मीन सम इज अबाउट ऑड इवन, तो वो ऑड इवन वाले मेथड में हो जाएगा, ठीक है. तो 5 6 हम मोड में ले लेंगे, 7 8 9 10 रेडी, 11 ऑड इवन, 12 ओवर, 13 ऑड इवन, 14 ओवर, 15 ओवर, 16 मैंने आपको बोला कि लास्ट एंड में करेंगे, एंड में मीन्स 7.11 का लास्ट सम हमारा 16 होगा. 17 ओवर एंड 18 हम मोड में करेंगे, ठीक है. एंड एक 19 बीच में कर लेंगे, वो तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड 20 इज ऑड इवन, 21 हो गया. ओके, चलो, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 पार्ट हम ले लेंगे, 1 पार्ट मॉड्यूलस, सेकेंड पार्ट ऑड इवन. ओके, next taking the 3 odd even sums, odd even type. Now how to write, see the method here. I equal to negative to positive, means sum is about odd even on only one term, sin square x, बराबर. f of x equal to total equation is your f of x. Now putting minus x equal to putting minus x. Okay, there is a square, so answer positive, sin square x. So f of minus x equal to sin square is our f of x. So by putting negative sign, answer is positive. So f is an even function. So I equal to this integration twice a limit 0 to pi by 2 and sin square x dx. Now this sum directly we can solve also.
No problem in this. Okay, direct solution possible. Okay, I 2 integration 0 to pi by 2. How to find the integration of sin square? जो कि मेथड तो अब वही करनी पड़ेगी, sin square integration. Okay, तो one removing square formula 1 minus cos angle double whole divide 2. 2 cancel. Integration of 1 is a x, cos is a sine, angle 2x by 2. 0 to pi by 2. Now upper minus lower, pi by 2 minus. Here putting pi by 2. So 2 cut and sin pi is 0. Minus lower limit is 0, so 0 minus 0. Okay, the answer of I is a pi by 2. And over. Done. The next number 13. Again minus 2 plus, but sin raised to 7. So f of x equal to sin power 7. Now putting minus x raised to 7 minus x. Power is odd or power is even? Power is odd. Okay, if your power is odd, then we have to use our rule. So sign and negative though, negative outside. It means minus sin raised to 7x. So f of minus x equal to minus, and sin raised to 7 is our f of x. So putting negative, answer negative. So f is odd function. Okay. So I equal to answer 0. Done. Next number 20. Here x. Here also x. Here also x, but here no x. It means only 1. So 1 is constant. Agar this sum is about odd even, and there is a single constant value like 1, तो वहां से separate करो. Like I minus pi by 2 to pi by 2 x cube plus x cos x plus 10 power 5 dx plus integration minus pi by 2 to pi by 2 and 1 dx. Only constant तो constant separate कर दो आप, ठीक है. ओके, तो I equal to I1 plus I2. Now solving I1 and I2. Okay, I1 minus pi by 2 to pi by 2 x cube plus x cos x plus 10 raised to 5 dx. Minus 2 plus, so taking this term is f of x. X cube x cos x plus 10 raised to 5. Putting x equal to minus x cube plus minus x cos minus x plus 10 raised to 5 angle minus x. Okay, minus x cube means minus n x cube. Cos and negative तो positive, तो minus x, तो here minus sign x into cos x plus 10 raised to even power or odd power? Odd power. तो check the rule, 10 and negative तो negative outside. अगर इवन पावर होता तो हम ये चेक नहीं करते, ठीक है. 1 मिनट. Now minus sign common. So bracket x cube
plus x cos x plus 10 raised to 5. So this bracket is our f of x or not? Minus f of x. Okay. So f is odd function. So answer of I1 is 0. I1 solution over. Now solving I2. What is I2? 1 dx. So I2 integration of 1 is a x and minus pi by 2 to pi by 2. Or upper minus lower. Pi by 2 minus n minus pi by 2. तो I2 आंसर क्या होगा? Pi by 2 minus minus plus pi by 2. Pi by 2 plus pi by 2 pi. The answer of I2 is pi. I1 is 0, I2 is pi. Then your line putting the value of I1 and I2 in equation 1. So 0 plus pi, answer is a pi. So 3 sums odd even over. Okay. In your next part we will take the modulus sum. Okay. चलो तो ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है, बराबर. तो मोड वाले अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. वन एग्जांपल अबाउट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मींस odd even type last sum this one, and then we will solve question number 19, बराबर. then 3 modulus type sums and वो 16 एक बाकी है लेंथी सम वो, ठीक है. चलो माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स. हाँ तो odd even मेथड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स पुटिंग माइनस. तो साइन स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर. सो नो नीड टू चेक द रूल, डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स. ओके. तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आंसर एफ ऑफ एक्स. सो हियर एफ इज एन इवन फंक्शन. Therefore, I equal to twice limit 0 to pi by 4 sine square x. Now, I equal to solving our integration to integration 0 to pi by 4 and sine square how to solve 1 minus cos angle double whole divide 2 to cancel. I equal to integration of 1 is a x minus cos is a sine angle 2x by 2 and 0 to pi by 4. Now upper minus lower. So I equal to putting pi by 4. Pi by 4 minus putting here pi by 4. So 2 into pi by 4, pi by 2 and sine pi by 2 is 1. So 1 by 2. Minus lower limit is 0. So here 0 and here 0. So sine 0 is 0. It means 0 minus 0. Answer of I is a pi by 4 minus 1 by 2. Then जो भी आपको अरेंज करना है वो, ठीक है. चलो next taking the number 19. Prove that 0 to a f of x into g of x dx equal to 2 times 0 to a f of x dx. And if these two equations for the f of x and g of x given, f of x equal to f of a minus x, and for the g of x plus g of a minus x equal to 4. It means these two data are given. Then prove that LHS equal to RHS. So first writing these two. This is equation 1 and this is equation 2. So here f of x equal to f of a minus x, one equation, and g of x plus g of a minus x equal to 4. Now starting with the LHS. LHS means I. Integration 0 to a f of x into
जी ऑफ एक्स डी एक्स। चलो यहाँ पर जो कुछ भी वो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स मीन्स अप्लाइंग द एडिशन ऑफ लिमिट माइनस एक्स, तो दिस इज ए नंबर 3। 1 2 तो हमने ये ले लिया, तो 3 and 4। ओके, चलो नाउ अप्लाइंग द एडिशन ऑफ लिमिट माइनस एक्स, सो I 0 to a f of a minus x into g of a minus x dx 0 to a। हाँ, f of a minus x equal to putting f of x and into g of a minus x as it is, and this is the number 4। जो नॉन वैल्यू थी वो हमने पुटअप कर दी, f of a minus x, because our requirement is f of x, f of x। Now adding 3 and 4। तो I plus I 2I, लिमिट सेम 0 to a, तो एडिशन ऑफ टर्म f of x g of x प्लस f of x g of a minus x, dx, ready? 2I 0 to a, out of these two terms f of x common, so bracket is g of x plus g of a minus x, f of x into bracket is a g of x plus g of a minus x equal to 4। तो 2 and here 4 outside 0 to a f of x dx, तो 4 by 2 is a 2। ओके, चलो तो I equal to 2 integration 0 to a f of x dx, रेडी? तो हमने यहां पर f of x पुटअप किया था, तो राइट हियर इन द ब्रैकेट y here f of x, f of a minus x equal to f of x because of equation 1, and y here 4 because of equation 2। डन? चलो दिस इज LHS to RHS, कुछ नहीं किया है, जो दिस टू डेटा आर गिवन and this is our LHS, putting the a minus x, then a minus x is f of x, equation 1। now adding 1 and 2 means 3 and 4, तो दोनों का एडिशन कर दिया, here f of x common, तो g of x plus g of a minus x which is 4 because of equation 2, now 4 and here 2, तो 2 f of x, LHS equal to RHS। done? चलो now in our next lecture we will solve 3 modulus sums, and अगर एक दो एग्जांपल पे भी है तो वो भी ले लेंगे, and then main question 16, बराबर 4 और 5 मार्क्स लेंथी सम है वो, ठीक है। चलो।